in Pakistan. So DNA, which is deoxyribonucleic acid, is present in the nucleus of all the eukaryotic cells in every human being. The nucleus is made up of basically a large part, which is a chromosome, जिसमें आपका genetic material होता है. Each chromosome is made up of, there are two complementary strands of DNA. Now these complementary strands जो होते हैं basically ये sugar phosphate strands होते हैं, which are the backbone of the genetic material, which supports it. Each nucleotide consists of a phosphate, which is a backbone, deoxyribose, and of four bases that consist of adenine, thymine, guanine, and cytosine. Now these four nitrogenous bases, what is their role? Basically, their role is they allow DNA replication to take place, and they are responsible for the protein synthesis. Basically, when we talk about DNA, there are two types of DNA. One which is present in the nuclear chromatin, and another is the mitochondrial DNA. Not necessarily you can take out the chromatin from the nuclear base, you can take out the data information from the mitochondria as well. And not only जो DNA आपको information दे रहा होता है, it's not only related to the identification. It gives you an idea about the lineage also, from the father to the mother also, and to the grandparents. यानी कि lineage from the Y side से भी and to the X side, दोनों की lineage बताता है. तो mitochondrial DNA जो वो mother side पे आता है, and then we concern about the Y analysis होती है, तो Y analysis to the father side होती है. तो एक broad perspective होता है आपकी heredity के बारे में, lineage के बारे में पता. So characteristics of DNA, each person has a unique DNA profile. When we have studied in dactylography, that is a fingerprint, it says that every individual on the planet Earth, they have a unique fingerprint profile. Not two individuals will have a same fingerprint profile. किसी के भी दो लोगों के या पूरी दुनिया में लोगों की same profile नहीं आ रही. हर एक की जो fingerprint pattern होता है वो एक दूसरे से different आ रहा होता है. तो ये तो एक positive identification होती है. But still we say that DNA is superior to DNA to the fingerprinting. Why? ऐसे in cases where there is scarring of the fingerprinting, तो उसमें they will hinder the investigation. But DNA में ऐसा नहीं होता. DNA, you can get the sample from all the biological fluids that are available. Even if there are years and years have passed, still that will be play an active role in the establishment of identity. As we are saying that no two individuals will have the same DNA, yes, that's true. But if they are identical twins, तो उसमें जो होता है वो they will have the same profile. तो यहाँ पे वो जो हम कहते हैं ना 99.9% जो होती है identity establish करती है, जो 0.1 आ रहा होता है, the difference आ रहा होता है, was because of identical twin के basis पे आ रहा होता है कि जिनमें same मिलता है. Each person's DNA is the same in every cell. An individual's DNA profile remains same throughout the life. Remains जो genetic material वो same होता है, लेकिन उसकी maturity आ रही होती है. From the childhood to adolescence to the old age, उसमें सिर्फ alteration हो रही होती है, पर genetic material same रहता है. Most DNA is the same from person to person. Almost individuals, human beings, उनके DNA same होता है, लेकिन किसी एक locus पे जाके वो one individual को दूसरे individual से differentiate कर देता है. Human DNA has around 3 billion bases, and more than 99% of those bases are the same of all people. जैसे हमने बात की, जो 1% आ रहा होता है, वो उस basis पे किसी की individual identity बन रही होती है. How DNA is used as an evidence? How do you use it in a code? Only 1/10 of a single person of a DNA, that is about 3 million bases, differ from one person to the next.
If it's such, how do you establish that identity? In criminal cases, obtaining samples from crime scene evidence and a suspect, which is known as a trace evidence, if two objects come in together, कोई ना कोई trace evidence एक दूसरे के ऊपर होगा. If there is a crime has been committed, जो biological samples मिल रहे हैं, even the non-biological samples मिल रहे हैं, और वहाँ से if there fluid sample मिलता है, you obtain the samples from there. If the sample profiles don't match the person, it means the person who has been convicted, he did not contribute to the crime or did not contribute the DNA at the crime scene. Is it true? If such happens, क्या हम उसको लेबल कर देंगे कि he is not responsible? No. In such cases, maybe other step of test is involved होते हैं. Each person DNA is different from other people except identical twins होता है. ये cases होते हैं कि जिसमें इनकी same profile आ रही होती है. लेकिन अगर crime as such इन cases में हुआ है कि जिसमें identical twins involved हैं, तो वहाँ पे difficulty होती है. Then and there fingerprinting जो होती है, dactylography plays an important role के जिसमें आप differentiate करते हो दो individuals में, identical twins में. Identifying a victim through DNA of relatives even when no body can be found. Yes. In such cases, when no body has been discovered at the crime site, but you have found some biological materials like hairs or fluid sample or blood or semen or sweat or saliva, you can detect that person through his extended family members. Now here जो हमने पहले बात की थी, mitochondrial DNA analysis from the mother side and by DNA analysis from the father side, आप एक broad profile create करते हैं और वहां से suspect को जो है वो निकालते हैं. DNA profiling is used successfully to positively identify victims of mass casualty incidents. Commonly, mass casualty are those casualty in which the number of victims are more than 12. If more than 12 victims are present, you call it the mass disaster or mass casualty. In such cases, identification becomes difficult because if the mass disaster or mass casualty is of a burn, if the mass casualty in cases of extended bomb blast, in cases of air accidents, in cases of road accidents, or in cases of railway accidents, in which individual personality cannot be established, then DNA comes handy in such cases कि आप individual identity number of people को mark or rule out कर रहे हो. DNA profiling is also used in DNA paternity testing to determine if someone is the biological parent or grandparent of a child with a probability of percentage is typically 99.99% when the alleged parent is biologically related to the child, as I have told you before. एक तो होता है न्यूक्लियर डीएनए जो कि आपने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किया होता है फ्रॉम द फादर्स टू द चिल्ड्रन, मदर टू द चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, और एक कंप्लीट साइकिल चल रही होती है जिसमें आप न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन जो होती है डाउनलोड हो रही है, तो जनरेशन टू जनरेशन डाउनलोड हो रही है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं वो सिंगल लीनेज होती है. सिंगल लीनेज का मतलब होता है कि टू सेट आ रहे हैं फादर मदर, तो उसमें जो मदर की लीनेज होगी फ्रॉम मी, फॉर एग्जांपल फ्रॉम मी टू माय नानी टू माय परनानी टू माय परनानी, मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लीनेज जो होगी उसकी ट्रैक डाउन हो रही होती है, डाउनलोडिंग हो रही होती है. तो दैट इज वेयर द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जहां पे एस्टैब्लिश करनी होती है आइडेंटिटी, उसमें हैंडी होती है. Normal DNA sequencing methods happens after birth, but there are new methods to test. Acha, in cases where when the mother is pregnant and still the paternity testing has to be evaluated, there are new techniques that are available in which even if the mother is around more than 11 weeks of gestation period, उसमें paternity can be established through the chorionic villus sampling or through the simple blood testing of the mother, कि जिसमें genetic material को जो उसकी evaluation हो जाती है for mother and father को detect करने के लिए. Now the biological evidence. What is the biological evidence, which could be blood, semen,
teeth, hair along with the root, urine, bones, muscles, they all are the biological evidence and they help for the DNA collection. Biological samples belonging to the category like liquid blood or dry deposited on a support, ये एक evidence. Various biological secretions like saliva or semen or mixture of secretions originating from the any sexual act. Hard tissues like bone and teeth, hair with follicles, जिसमें root होंगे, slides with cytological smears. Cytological smears का मतलब होता है कि जिसमें if you detect any disease, उसमें भी DNA, if you're detecting any genetic disease or hereditary disease, तो उसमें भी DNA evaluation होती है, helpful होती है. Identification cases are required. Identification is required in which cases? कौन से cases होंगे? Number one is the sexual assault, जिसमें DNA in our country, all around the world, DNA is basically superior एक evidence होता है. But in Pakistan, it is not superior. एक second line evidence होता है DNA. उसके अलावा भी आपको first line पे support करना होता है कि if the sexual act has been committed or not. Homicide and other violent crimes के जिसमें identity को prove करना है, exculpate wrong accused suspects जिसमें आपने एक crime scene पे if you have if there are multiple biological evidence has been recovered and they give a suspect about 2 or 3 in number, तो एक को pinpoint करने में उसमें DNA identification helpful होती है. Identifying of the human remains in cases where the human remains around 100 years, 5 years, 10 years की कोई recover हुई है, and then you have to establish identity जो कि unknown individuals इनकी recovery होती है, उनमें helpful होता है. Sex offenders and trafficking उनमें helpful होते हैं DNA identification. Paternity and commonly maternity and paternity cases में to establish the identity of the child उसमें helpful होती है. Now items which may contain DNA material, आपका DNA material आपने कह तो दिया या biological samples हैं. Biological samples सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ blood मिला है, इसमें सिर्फ इसी को आप detect करना होता है. बाज़ जो trace evidences मिलते हैं, बाज़ जो circumstantial evidences मिलते हैं crime site पे, they can also helpful in collecting the DNA. They could be, for example, baseball bat or any similar weapon के जिसमें transfer of evidence हुआ तो वहाँ से आपकी source of DNA आपको मिल सकता है. Hat, bandana और mask अगर किसी ने wear किया तो वहाँ से sweat transfer होगी, sweat की, hair की और dandruff की, ये helpful होते हैं. Eye glasses जो कोई पहनता है उसमें sweat और skin samples मिलते हैं. Facial tissues या cotton swabs होते हैं, dirty laundries होती हैं, toothpicks होते हैं, used cigarette होते हैं जिसमें saliva के traces मिल सकते हैं. स्टैम्प और एनवेलप्स होते हैं उसमें मिल सकते हैं. टेप और लाइगेचर मार्क्स जो होते हैं कि जिसमें उसमें ट्रांसफर ऑफ एविडेंस हो सकता है थ्रू एपिथेलियम, थ्रू और स्वेट के. इसी तरह बॉटल, कैन और ग्लास होता है. यूज्ड कॉन्डम है, ब्लैंकेट, पिलो और एनी शीट्स हैं. थ्रू एंड थ्रू बुलेट. थ्रू एंड थ्रू का बुलेट का मतलब है एनी फायर आर्म इंजरी के जिसमें बुलेट बॉडी में एंटर हुई है और एग्जिट हुई है. तो as such bullet जो भी it will carry the biological material, skin and blood material जो भी उसमें होगा. Bite marks, fingernail and partial fingernails. Fingernail scrapings जो होती है, nail bed के अंदर जो भी scrapings लेनी होती है जिसमें epithelial tissues हो सकता है, sweat और blood होते हैं, ये helpful होते हैं. Now method of DNA collection. You know the source site identifier, then how do you collect it? Collection is by either it could be dry or wet. If it is wet, it needs to be air dried and then sent for further investigation. If it is dried, then scrapings should be done. If there is a presence of any fingerprint or sweat, then tape lifting should be done for a dried stain. Swabbing means swabbing of the stain means simple अगर wet stain है, swabs, multiple swabs जो होते हैं जितने biological material crime site में पे मिल रहा है,
any blood stain throughout the room, तो हर stain को mark and number करके, and then every swab should be collected and numbered. That will help in detecting how many suspects were involved. Investigators gather samples from the crime scene and specific DNA region or markers उसको detect किया जाता है. A match of one marker is not usually unique, but if a sample matches 4 or 5 markers, there is a very good chance it is a match. Now हम DNA जो markers की बात हो रही है उसमें कि if there are 3 suspects that are present और एक आपके पास sample review है, अगर वो मल्टीपल साइट पे मल्टीपल डीएनए एनालिसिस में मैच हो रहा होता है या एक साइट पे मैच हो रहा होता है, तो आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे. दे हैव टू बी मैच फ्रॉम मोर देन 3 और 4 साइट्स पे सिंपल मैचिंग आती है, और एक सस्पेक्ट या 2 सस्पेक्ट्स में आ रहा होता है, तो उसमें आप रूल आउट करते हो कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व. DNA is collected at a crime scene in a variety of ways. एक तो जैसे बायोलॉजिकल फ्लूइड एग्जामिनेशन में बात की थी, एक तो नेकेड आई फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके अलावा फिर केमिकल एग्जामिनेशन होता है. फिजिकल एग्जामिनेशन में आप एक नेकेड आई एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद देन कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है या स्कैल्पल्स होते हैं, ट्वीजर से हेयर्स को रिमूव करेंगे. यूवी लाइट या लुमिनॉल एग्जामिनेशन होता है जो डिटेक्ट करता है पॉजिटिविटी फॉर ब्लड स्टेन in cases of simple living individuals as well as dead individuals. Living individuals में तो simple ये है कि आपने swabs collect करने होते हैं, hair sample ले लेने होते हैं, लेकिन dead individual में multiple techniques involved होती हैं. Now that transfer of DNA किस तरह होता है? Simple Lugard's exchange या trace evidence जो होता है वो एक दूसरे में exchange हो रहा होता है. या तो सस्पेक्ट्स डीएनए डिपॉजिट ऑन द विक्टिम बॉडी और क्लोथिंग या क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे डिपॉजिट होगा. इवन अ सिंगल hairs from either of the body part, from the hairs or from the body or from the pubic region, can be helpful in identifying the individual. Suspects DNA deposit on the object, any weapon use किया. Suspects DNA deposit on the location. लोकेशन अंदर कोई स्वेट है, कोई उसकी सिगरेट मार्किंग है, कोई उसके फुट मार्क्स हैं. विक्टिम्स डीएनए डिपॉजिट ऑन द सस्पेक्ट बॉडी और क्लोथिंग ट्रांसफर हुआ. विक्टिम्स डीएनए डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, वाइस वर्सा. विक्टिम्स डीएनए डिपॉजिट एट अ लोकेशन. नाउ ये सब चीजें जो होती है which is known as the touch DNA, means two objects एक दूसरे आ रही है तो there is bound to be a transfer of evidence unless and until one of the individuals they are covering their hands or they are covering some sort of उनके foot marks को cover कर रहे हैं, तो वहां पे difficult होता है. What is the protocol? The protocol is to do not touch. Simply basically DNA analysis की DNA analysis करना आसान है. जहां difficulty आती है वो ये है कि the person who is collecting the sample, he must have change the sample, या उसकी collection procedure उसका सही नहीं था, या उसका जो amount of cells he has collected that was not sufficient, तो वहां पे data analysis में issues आता है. So basically at the site, do not touch, cover your face and do not cough. Use clean gloves, disposable gloves and disposable mask. Each piece of evidence is separate packings होगी, यानी कि nails को अगर है evidence मिल रहा है, blood का sample मिल रहा है, hair sample, every sample, individual samples and every sample जो आप मार्क करते हैं मीटर्स में, उसकी नंबरिंग, उसकी केस नंबर के हिसाब से को मार्किंग अलग उसको किया जाता है. एंड सिंपल है कि सैंपल्स शुड बी स्टोर्ड इन अ पेपर एनवेलप्स एंड बैग्स. जो स्वॉब्स होंगे वो तो उसकी ग्लास ट्यूब में होंगे, लेकिन अगर हेयर ड्राई सैंपल्स हैं उसको आप सिंपली जो होता है पेपर बैग्स या एनवेलप्स में स्टोर कर सकते हैं. वेट सैंपल को एयर ड्राई करके फिर स्टोर किया जाता है. जहां पे भी एविडेंस कलेक्शन होती है उसकी एवरी सैंपल जो है उसकी केस नंबर, आइटम नंबर, डेट, टाइम, लोकेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करना जरूरी है. एंड देन फाइनली चेन ऑफ कस्टडी इज मैंडेटरी, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे उसकी कस्टडी मेंटेन ना हो और वो बीच लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ही रिमूव हो जाए. Then transport and storage. Biological evidence should be dry and placed in a cold storage. In case samples के उसकी detection में time है तो उसको they need to be stored around 4 degrees centigrade or 20 degrees centigrade. And if a longer time, क्योंकि samples DNA samples जो भी लिए जाते हैं
इट इज मेंट दे कैन बी स्टोर्ड टू अबाउट 15 to 20 years तक उसकी स्टोरेज हो सकती है। तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड में उसकी कोल्ड स्टोरेज होती है अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको स्टोर किया जाता है। जो बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन में कॉमनली यूज होते हैं वो तो बायोलॉजिकल सैंपल है, लेकिन डायरेक्टली सैंपल्स को नहीं आपने प्रोसीड करना होता है डेटा एनालिसिस के लिए डीएनए के लिए। दैट्स वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू गो फॉर अ डीएनए। तो सबसे पहले मैंडेटरी है, इफ सच एज अ ब्लड, सीमेन एंड सलाइवा, what you need to do is those biological samples, they need to be examined to detect either they are human origin or animal origin, to detect either it is that sample is blood or not। तो इसकी डिटेक्शन जो होती है वो दैट इज मैंडेटरी प्रायर टू पुटिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द डीएनए प्रोसेस करना होता है। तो ये इनकी डिटेक्शन जो होती है वो जरूरी है। एंड जो डिटेक्शन जो टेस्ट होते हैं दैट इज सेम जो कि हम किसी भी ब्लड एग्जामिनेशन के लिए करते हैं कि उसके केमिकल टेस्ट होते हैं, उसके प्रिजम्पटिव टेस्ट होते हैं, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। सेम फॉर ब्लड, सेम फॉर सीमेन एंड सेम फॉर सलाइवा। Analysis of DNA, this topic you will cover in the next lecture। वेरियस टेक्निक्स होती हैं जिसमें एक होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR is commonly used technique throughout the world। जो डीएनए टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। PCR not only for crime detection के लिए आप करते हैं या आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, PCR also it is performed for genetic testing in cases of any diseases, in cases of any cancers कि जिसमें हेरिडिटी जहाँ मदर फादर के हैं, you need to check that क्या either की चिल्ड्रन में भी इनहेरिट किया है कि नहीं। तो पीसीआर कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज होता है। दे आर बेसिकली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, but if it is used for detection of in cases of crime, procedure is the same as for any जो diseases के लिए use किया जाता है। Then है short tandem repeat mitochondrial DNA analysis and y-DNA analysis। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में क्या होता है कि थ्रू दी बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए को एंजाइम के तौर पे ब्रेक किया जाता है, और जहां उसको ब्रेक किया जाता है उसी सेगमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। एक होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। शॉर्ट टैंडम रिपीट में ये होता है कि जो डीएनए जैसे पीसीआर कर लिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया, स्मॉल माइन्यूट सैंपल की मल्टीपल फोटोस्टेट कॉपीज बना ली। अब उन फोटोस्टेट कॉपीज में व्हाट यू डू इज दैट यू सी कि कहाँ लोकस जो है वो सेम रिपीट हो रहा है, और जहां रिपीट हो रहा होता है व्हाट यू डू उसको आप रिमूव करते हो और फिर उसको एनालिसिस करते हो। तो ये शॉर्ट टैंडम रिपीट होता है। यू विल डू दिस डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ दी अब जो मल्टीपल टेस्ट है, हर टेस्ट अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो कितने एनालिसिस टेक्निक है क्या हम हर सैंपल के ऊपर यूज करते हैं? नो, वी डोंट डू दैट। हर डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस जो एनालिसिस टेक्निक होती है वो अकॉर्डिंग टू द केस उसको यूज किया जाता है। तो हर एनालिटिक टेक्निक्स के एडवांटेजेस भी होंगे और साइमल्टेनियसली उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे कि सनलाइट या मॉडरेट टेम्परेचर वाइज आप सैंपल को स्टोर करते हो। ऐसे नहीं होता कि कोल्ड में रख दिया, क्योंकि हो सकता है उसका सैंपल एक्सपायर हो जाए, हो सकता है सैंपल डिग्रेड कर जाए। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने सैंपल स्टोर किया सनलाइट या मॉडरेट टेम्परेचर से, आपने उसकी सैंपल को कलेक्ट किया है, तो अप टू कैन बी टेस्टेड अप टू 6 वीक्स तक आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। हॉट ह्यूमिड वेदर है तो 10 डेज और लेस में आपने उसकी एनालिसिस करनी होती है। जहां पे देयर इज नो सनलाइट बट द वेदर इज हॉट, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो 5 मंथ्स और मोर है। गैस, ऑयल, डिटर्जेंट्स, एसिड बेस, सॉल्ट, यानी कि अगर कोई ऐसा सैंपल है कि जिसमें मिक्स हुआ हुआ है, जिसमें एक्सपोज हुआ हुआ है गैस से या ऑयल या डिटर्जेंट से या एसिड बेस से, सॉल्ट है, ब्लीच है, या फिर उसमें नॉन ह्यूमन डीएनए का मिक्सचर है, तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। यू कैन बी टेस्टेड, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। थ्रू प्रोसीजर्स आप उसको रिमूव कर सकते हो। और इफ सॉइल सैंपल है तो सॉइल सैंपल में भी होता है कि टेस्टिंग टेक्निक जो होती है वो प्रिक्लूड हो जाती है।
अच्छा, क्राइम सीन में अगर आपने सैंपल लिया तो एक सैंपल आप लेते हो और एक रेफरेंस सैंपल होता है। रेफरेंस सैंपल का मतलब होता है कि आप एक जो बॉडी से आप ले रहे हैं और एक सैंपल जो है उसको आपको क्राइम साइट पे मिल रहा है, और एक हो सकता है थर्ड सैंपल आपको जो सस्पेक्ट आप कर रहे हैं लोगों को उनका भी एक आप कंट्रोल सैंपल ले रहे होते हैं, रेफरेंस सैंपल होता है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट एंड डीएनए की प्यूरिफिकेशन होती है। फिर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इन सेक्स असॉल्ट केसेस सेपरेट्स आउट डीएनए फ्रॉम द स्पर्म सेल्स। इन केसेस जहाँ पे आपको सिर्फ स्पर्म होता है, सैंपल मिल रहा होता है ट्रेस एविडेंस, तो वहाँ पे आप उसकी डीएनए भी कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू आप डीएनए करते हैं। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसमें आपने डीएनए करना है, सिंपल टेक्निक है, ट्यूब ए, ट्यूब बी एंड ट्यूब सी है। ट्यूब ए इज फ्रॉम द डीएनए from the body which is present. This is just an example. DNA from the body in the bag. Tube B is the DNA from the elementary, and tube C is the negative control. Negative to positive charge movement हुई। अब यू कैन सी कि हमने जो बात की थी ना कि सीक्वेंसिंग हम मैच करते हैं, ए हमारे पास जो है वो दैट इज द सैंपल, बी हमने कहीं से रेफरेंस सैंपल लिया है, सी भी जो है हमारा रेफरेंस सैंपल है जो कि हमें क्राइम साइट से मिला है। तो अब आप चेक करते हो कि कहाँ पे उसकी सेम मैचिंग आ रही होती है, एज यू कैन सी कि जहाँ पे रेफरेंसिंग आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है, आर द बैंडिंग पैटर्न इन लेन ए एंड बी द सेम? क्या आपको कहीं ए और बी का सेम लग रहा है? कैन यू आंसर इट? This would give us an evidence of the missing body. Okay. ये सिंपल क्वेश्चन था कि अगर मिसिंग बॉडी का होता है तो कहाँ पे ए और बी में एक पॉइंट पे आके सेम जगह पे वो मैच कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, और एक जगह वो एक और सेकंड पॉइंट पे एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो दो जगह अगर मैचिंग आ रही होती है तो यू कैन प्रिडिक्ट के बॉडी इज द सेम। Now, what is the future of DNA analysis in Pakistan? Pakistan में work of DNA is pretty new. New in the sense like it's approximately 10 to 15 years इसको start में। पाकिस्तान में जो DNA testing laboratories है, they are very few. One which is doing extraordinary work is the Punjab Forensic Science Laboratory. बाकी अनदर जो प्रोविंसेस हैं उसमें भी लैब्स दे आर प्रेजेंट, बट दे आर शॉर्ट ऑफ पीपल हु आर ट्रेन्ड, बिकॉज यू नीड पीपल हु आर ट्रेन्ड इन डीएनए टेस्टिंग। द मोस्ट प्रोबेबली जो हिंड्रेंस आती है डीएनए टेस्टिंग में और जो कि पॉइंट एंड प्रूवन है, एक है कंटामिनेशन डीएनए दैट अराइव बाय सेकेंडरी ट्रांसफर। ये जो हमने चेन ऑफ कस्टडी की बात की थी, एक तो आपने कंटामिनेशन लैब में हो रही है कंटामिनेशन, एंड सेकंड कि पीपल हु आर कलेक्टिंग द डीएनए फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द क्राइम साइट, दे उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं है, उसमें कंटामिनेशन, कलेक्शन में कंटामिनेशन है और मूवमेंट में कंटामिनेशन है। तो ये लाइकली है कि दैट में रिजल्ट इन जिसमें poor DNA analysis reports आती हैं। Punjab Forensic Science Agency, being the largest forensic DNA laboratory in Pakistan, has been helping solve the rape, murder, dead body identification, siblingship and parentage cases. They are commonly involved. They are doing their best of the work. And commonly इनका जो pronounced work है, that is the Zainab murder cases, they have done their good work, and also in the disaster of the last year's disaster, उसमें उनका बहुत अच्छा work था PFSA का, जिसमें उन्होंने डेड बॉडी बर्न बॉडी आइडेंटिफिकेशन में जो एयरलाइन डिजास्टर हुआ था उसमें उनकी आइडेंटिफिकेशन, they have done their good work. So these are the two articles, and you can study के फॉल्ट क्या है डीएनए का और उसकी कोर्ट में क्या रूलिंग है, पाकिस्तानी कोर्ट में डीएनए की रूलिंग क्या है। हम स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी वी से दैट डीएनए इज प्रायर टू एनीथिंग, बट जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं दे वर्क डिफरेंटली एंड दे हैव स्टेज्ड देम एज द सेकेंडरी एविडेंस
DNA की जो evidence है that they have staged them as a secondary evidence prior to anything. So we will complete this lecture with a case report. Accused and victim were in a live-in relationship. Victim gave birth to a male baby. Baby was only 8 days old. Accused father of the baby told victim that the baby is ill and took him to a doctor. He took the baby, he killed him and thrown his body in the river. Complaint was lodged by mother of the baby in police station. Now, in such case, अगर complaint lodge होती है, there are multiple scenarios open होते हैं कि जब तक body discover नहीं होती, multiple होते हैं कि बेबी को क्यों मारा, फिर सबसे पहले होता है रिकवरी ऑफ द बॉडी, फिर होता है कॉज क्या है, मर्डर का कॉज क्या है, फिर जब कॉज आता है तो उसमें इन सच केसेस जहां पे न्यू बेबी है, जो 8 डेज ओल्ड बेबी है, उसमें क्वेरी इन्वॉल्व होती है मदर एंड फादर की, एंड देन फाइनली पेरेंटेज का आती है, आधा मदर और द फादर वर एक्चुअली द पेरेंट्स और नॉट, तो वहां पे डीएनए एनालिसिस वर्क करता है। अगर बॉडी रिकवर हो जाती है, क्योंकि मेन जो अगर डीएनए एनालिसिस होगा वो तो बॉडी की रिकवरी पे होगा, बॉडी रिकवर होती है तो उसमें जो एनालिसिस की गई उसमें स्टर्नम बोन्स, यानी कि स्टर्नम में फीमर बोन है, स्कैल्प हेयर्स ऑफ द बेबी इंक्लूडिंग द ब्लड सैंपल्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स, इनको लिया गया था एंड देन उनकी डीएनए एनालिसिस की गई। The nuclear DNA जो था analysis shows mismatch of the father with son at only one locus. एक पॉइंट ऑफ द लोकस पे जो था उस पे मिसमैच था, बाकी जो था वो सारा मैच हो रहा। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है जैसे डीएनए रिपोर्ट पे एक कह दिया कि एक मैचिंग हुई एंड द फादर वाज टारगेटेड एज दैट he is not the father, उसके लिए सेकेंडरी फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। दैट्स व्हाई जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना कि इसको सेकेंडरी लेते हैं, तो अगर आप 100% ऐसे केसेस पे करते हैं तो फिर इसकी चेंजेस ऐसे केसेस की जो सॉल्विंग रेट होती है वो कम हो जाएगी। तो उसमें दूसरी चीजें आती हैं, उसमें क्या दूसरी चीजें आएंगी, उसमें फिंगरप्रिंटिंग होती है, उसके अंदर सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं जिसमें मदर से भी आएगा, फादर से भी आएगा। अब ये तो सिंपल जो न्यूक्लियर डीएनए हुआ था, उसमें जो सेकंड डीएनए आएगा वो है वाई क्रोमोसोम एनालिसिस होगा, और एक होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस के, जिसमें दोनों पेरेंट्स की जो लीनेज होगी वो